Shat Shat Naman to Kathak Samrat Padma Vibhushan Pandit Biju Maharaj Ji. A guru par excellence, someone who was multi-talented in so many facets of the arts. Dance, music, tal, nadya, vadya, anything, painting. To the world, he has taught us so much more than bhav and anga kavya and tal and lay. But for me personally, he was a guiding principle. And I hope and pray that these things are the lessons that I have learned from him, which go beyond dance, guide me throughout my life. Because he is a defining philosophy that I would like to follow. Simplicity, sincerity, selfless dedication and passion towards whatever your path might be. Humility, finding joy in the simplest things of life and nature, and finding rhythm and sharing that vision with everyone. I think he was a master innovator, somebody who conceptualized the most difficult and intricate of emotions into beautiful narratives, like the Loha, where beyond going into molding iron into a sword or a temple, it also talks about the complexities that a human being goes through, or that of a file going through from table to table as it journeys, the journey of a file through its life, or that of the most beautiful one of the things that I personally remember is Romeo and Juliet, a magnificent production, but grounded and founded in Kathak. My favorite memory of Maharaji that I'd like to share is I'd look forward to every time he sang Manade's song, Jodi kagoje lekho naam, she kagoj chhide jabe, pathore lekho naam, pathor khoye jabe, হৃদয়ে লেখো না সে নাম রয়ে যায়. And Maharaji is omnipresent. He'll always be there. And I hope and pray that for me, he remains that guiding light, that shining star. And I always hear his voice whenever I meet him. I'll take koshish. Please forgive me if I make any mistakes. Of a beautiful Tihai that I remember today. Janak janak tak tharike janak janak tak tharike janak tak dilam tak dilam tak dilam tak tak the janak janak tak tharike tak tharike janak janak tak tharike tak dilam tak dilam tak the janak janak tak tharike janak tak tharike janak janak tak dilam tak dilam tak dilam tak thing. Thank you, Maharaji. महाराज जी आपको मेरा शत शत प्रणाम. It's my life's most humble privilege to pay my tribute to you today. Just as it was my life's honor to be your student. I grew up with you and discovered my purpose of life with your help. After being initiated into Kathak by Reba Didi, having you as my guru transformed my life. Each moment spent with you helped me become more aware of my inner world and taught me how to consciously imbibe the beauty of my surroundings in all shapes and forms. Your minute observation of the universe and lessons that you created from them has helped me move closer to my self-realization. Whether it is the Tihais that you created, inspired by nature, or the supreme awareness and exquisite control of every part of the body, it has been such a wonderful learning experience. I have learned from you that powerful intent, ecstasy, and mizaz can shine through if the mind is in sync with the soul. You have taught me to find happiness within through dance. Thank you for encouraging me to further my sense of rhythm, beauty, and grace through Kathak. Although every second spent with you has been an enriching one, the last 2 years have been especially inspiring. When you
despite your bodily sufferings, decided to teach me virtually. I will miss your divine, inspiring, and charismatic presence. I will miss your 9 a.m. video calls and your happy voice saying, "Chalo, shuru ho jao." Maharaji, I am learning to not miss your physical presence by making your spiritual presence stronger in my life. I know that you are in the love and embrace of God right now and sending me countless blessings to remain steadfast in carrying forward the mission of beauty and strength through Kathak. With love, respect, and endless gratitude. Pranam. महाराज जी, आपकी एक बंदिश आपको समर्पित है. धागे तुना करते धा दिन दिन दा रा दिन दिन दा रा दिन दिन दा तक दिन दिन धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट गाने गिने धागे तिट देता 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 कड़ देता तगिन देता देता तेट का तागदी गिन दा तेट का तगदी धा तेट का तगदी गिन दा तेट का तगदी गिन दा तेट का तगदी गिन दा तेट का तगदी गिन दा. जय हो. हमारे परम पूज्य महाराज जी एक अद्वितीय व्यक्तित्व, ऐसा तो मैं तो कभी कोई देखा नहीं. कला जैसे नस नस में भरी है उनकी, और उसके साथ वो विनम्रता और कला के प्रति उनका जिज्ञासा. अब इतने बड़े कलाकार, लेकिन कुछ भी उनको हमको फोन करते थे, अरे कुछ सुनाओ. अब उनको क्या सुनाए, लेकिन ये कहना, ये पूछना, ये कक्षा के ऊपर पहुंच के, ये सबसे होता नहीं है. और महाराज जी तो कहाँ जाएंगे, महाराज जी तो सदियों यहीं है हमारे साथ. और जो काम उन्होंने किया है वो शायद कोई कर पाए, हमें नहीं पता. मेरा बहुत वंदन, शत शत वंदन. जय हो. Pranam Didi, and pranam to all senior gurus present here today. Didi, thank you for giving me this opportunity to talk today. Not only the entire Kathak world has lost the torchbearer of the Kalika Bindadin Gharana, but the entire art community has lost a Yug Purush. During my countless interactions with Maharaj Ji in the past 20 years, whenever he would come to United States for workshops and programs, or I went to Delhi in the past 7 years to learn, I always found him to be a very jovial person and one of the most humble artists I have ever come across. So hard to find such a multi-talented artist who is not only an excellent dancer, choreographer, composer, singer, percussionist, writer, painter, you name it. He seemed to be like a manufacturer of beautiful compositions all the time. I remember one instance when he came to Cleveland, Ohio, United States, to perform at the esteemed Tyagaraja Festival. Shashwatidi's room number was 524. And he saw at that the number, and instantly he started reciting 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, and then he created numerous patterns out of it. And we also learnt that Larry in the hotel room. So he was always ready to give, always ready to teach. And the last time I saw him, that was like 15 days ago, before he left, I learned a paran that I would like to offer that as a humble tribute to him. Dha din din da dha din din da dha din din da trak din din da dha din da da na din da dha ge dik da dha din da det da kir da ta ka thunga ta kit ta ka dha
धा 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 तिट कत गदि घिन धा दिन धा दिन तिन ता त्रक दिन धा दिन धा तिन ता त्रक दिन धा दिन ता धग दिग धा दिन ता दित्ता तिड़ दा तका तुंगा तकिट तका धा 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 तिट कत गदि घिन धा. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज महाराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ. ये मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज जी मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुए. अभी कल ही की तो बात लगती है जब मैंने महाराज जी के क्लास में सीखना शुरू किया. उनके निर्देशन में अनेकों बार प्रोग्राम किए, वर्कशॉप्स की, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला. और अब जब महाराज जी स्वर्ग प्रस्थान कर रहे हैं तो ये एक सपना सा लगने लगा है. महाराज जी ने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया, चाहे वो कोरियोग्राफी हो, कविता लिखना हो या मेरा डांस स्कूल ही शुरू करना हो. मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जो एक शिष्य की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है. महाराज जी ने मुझे गंडा बांधकर अपना शागिर्द किया. मुझे पूरा विश्वास है आज महाराज जी जहाँ कहीं हैं, स्वर्ग से हम सभी को देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं. महाराज जी एक युग पुरुष, एक उच्च कोटि कलाकार और गुरु रहे हैं. उन्होंने हमेशा सबकी मदद करी. उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं हर लिहाज से बहुत छोटी हूँ. जब भी कोई कलाकार, कोई भी स्टूडेंट उनसे हेल्प मांगने आता, वो हमेशा उनकी मदद करते. ऐसे दिव्यात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. महाराज जी की एक बंदिश के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ. Namaste. Pandit Biju Maharaj Ji. The name itself prompts us to bow down with reverence and deep gratitude. It's difficult to express in words his influence on my life and dance. My first encounter with Maharaj Ji was in Banaras for Kathak Mahotsav, where he had come with Kathak Kendra, and that was the first time that I had the opportunity to receive his blessings before going up on stage. And that was a great thing for me. To him, be it a child or an upcoming artist or a senior artist, he respected every artist the same. He would sit through the program, watch it, and also share words of encouragement. That was Maharaj Ji. He was a great mentor and a great visionary, because almost more than 25 years ago, he thought of bringing Kathak to the future generation, developing a love for this form of dance. And for that, he simplified the profound aspects of Kathak and brought it to the different cities in form of workshop, like bringing the oasis to the thirsty travelers. So we were very happy that we would now get an opportunity to learn from him directly in Mumbai. Although it is not possible to adapt his style in the 4-5 days of workshop, but whatever we got to learn was immense. I would try to absorb each and every movement, the finer nuances, the perfect alignment of the angas, upangas, and the stance. And apart from dance, also,
utna, baithna, whatever he shared was immense learning for us. And during this time in this workshop, I would like to also mention that I've yet to see such a dedicated disciple, in Shashwati Didi, she herself being an artist of such a great stature, and the total dedication to the mentor. And that was again a great learning. As in Maharajji, I never saw, see him scold anybody or, ignore anybody or say that, it's tumse nahi hoga or nahi ho raha hai. He was always smiling and immense patience. And so here I must mention that, after the workshop, after the long days of workshop, I was very hesitant to ask him for a video bite for my, Kalapi, the festival of my organization, Kalapi, in which I hold in memory of my Guru, Srimati Reva Vidyarthi, who was attached to Kathak Kendra for 35 years. He had so much love and respect for my Guru Reva Didi that immediately he said that, okay, you take the video. It was amazing, and the way he shared. And I share it in, every festival of mine. And to bring it to the future generation, he also gave name and classifies the different movements of Kathak and captured it in a book called the Anga Kavya, and which is a great gift for the future generation. And to me, it is not only a treasure for its content, but also because it has his signature and his blessings. So whatever I could gather from the great, immense ocean of knowledge and wisdom that Maharajji is, probably maybe even just a scoop, it's a great treasure for my lifetime. Thank you. Namaskar. The most overwhelming memory that I have about Maharajji today is of his kindness. He was magic on the stage, but he was also magical off stage in his kind-heartedness and his generosity to all of his friends as well as to his disciples. I think of the twinkle in his eye and the twitch in the corners of his mouth as his wit came through in his sharp perceptions that he shared on stage as well as off. For me, to sit with Maharajji was to feel in the presence of my Guru, Guru Kelucharan Mahapatra. They were both so humble, and they both were the consummate artists, dancers, teachers, choreographers, musicians in their respective dance genres. I'm grateful that before the pandemic, he was able, despite not having the best of health, to give an entire evening to share his Manodharma at my Manasa festival. And I'm grateful for all of the many decades of his friendship, his kindliness, and sharing his art and everything about him and his warmth and friendship. And I feel blessed that along with all of you, the whole extended clan of disciples and family and friends dedicated to the arts, that we have lost someone who is an important and very special part of our lives. Om Shanti. Salam doston, namaskar, and hello to all my friends. शाश्वती दी, आपको बहुत बहुत सलाम, सारे बुज़ुर्गों को नमस्कार। मैं अफसोस करती हूँ मैं दिल्ली नहीं आ सकी, कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इस तरह से नहीं ट्रैवल कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ हूँ। और मैं बस 2 शब्द महाराज जी के बारे में कहना चाहूँगी कि महाराज जी से ज़्यादा हसीन व तरीन, खूबसूरत और दिग्गज कलाकार, एक ऐसा डांसर जिससे डांस मोहब्बत करता था। हम सब डांस को सोचते हैं, डांस उनको सोचता था, उनकी मनन करता था, उनको फॉलो करता था। महाराज जी वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डांस एंड ब्यूटी, एंड महाराज जी जैसे कभी पहले पैदा भी नहीं हुए और होंगे भी नहीं।
ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके शागिर्द रहे, और मैं बहुत छोटी उम्र में ही चली गई थी उनकी क्लास में, 11 साढ़े 11 साल की उम्र से। और उस ज़माने में बैलेस शुरू हुए थे, तो हम लोगों ने फिर बैलेस में डांस करना शुरू किया और तालीम खाने में तालीम पाई महाराज जी से। और पूरा ज़िंदगी का इन्फ्लुएंस, उनका फ़लसफ़ा, उनका कुदरत से जुड़ा हुआ होना इतनी खूबसूरती से, हर चीज़, वेदर इट वाज परकशन और इंस्ट्रूमेंटल और पोइट्री, पेंटिंग, उनका लेंस ही अलग था। ज़िंदगी को जहाँ पे भी देखते थे उनको लय, मेलोडी और मूवमेंट डांस के थ्रू दिखता था, और वो उनके अंदर से ही उभर के निकलता था। ही वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डांस हिमसेल्फ। मैं तो कहती हूँ कि हम महाराज जी को देख के, उनसे सीख के नृत्य से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रक्स महाराज जी से ही मोहब्बत करता है और हमेशा करता रहेगा। हर फूल, हर कली में, हर हवा के झोंके में, हर पत्ते में, हर बारिश में महाराज जी हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज जी जैसे हस्ती कभी ख़त्म नहीं होते, और वो हमारे दिल में हैं। हम आँख बंद करके अगर मनन करते हैं, सोचते हैं 1 मिनट, तो महाराज जी की आकृति, उनकी उंगली से लेके पाँव तक हर चीज़ को ही हम लोग सोच सोच के नाचते हैं। इसलिए महाराज जी हमारे दिलों में, हमारी रूह में बसे हुए हैं, और मैं आप लोगों के साथ आज हूँ और हमेशा हूँ। मेरी किसी भी तरह से सेवा खिदमत की ज़रूरत हो तो ज़रूर कहिएगा, और बस खुदा हाफिज़। नमस्कार। आज हम लोग सब यहाँ पर महाराज जी की यादें साझा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। महाराज जी तो हर चीज़ में लय देखते थे। तो हम एक बार पूना से नासिक आ रहे थे, उनको त्र्यंबकेश्वर जाके शिरडी दर्शन करना था। तो रास्ते में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स थे। एक स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा था कि वो मतलब चल ही रहा था। तो महाराज जी को क्योंकि पीठ में दर्द तो होता था, तो और वो गिनते ही थे हर चीज़, तो वो 12 इसमें स्पीड ब्रेकर था। तो महाराज जी ने एकदम से कहा, अरे ये तो 1 ताले का है, 1 ताले का स्पीड ब्रेकर है। मतलब उन्होंने 12 नहीं कहा, 1 ताल का कहा। ऐसे हर जगह वो लय को ही देखते थे। एक बार मैंने उनको थोड़ा दुख से कहा कि महाराज जी, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में लोग कहते हैं कि महाराज जी ज़्यादातर 1-2 के दम ही यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सबको उठाने के लिए आसान होता है ना। पर वो रूम पर गए और दूसरे दिन जब वो क्लास लेने आए वर्कशॉप में, तो उन्होंने 1 तिहाई निकाली। मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है लगा। तिन तिन ता त्रक दिन दिन दा ता गिन ता किट ता गिन ता किट ता ता किट ता ता किट ता दाति दा न दाति दा न दाति दा ता गिन ता किट ता गिन ता किट ता किट ता किट ता दाति दा न दाति दा ता गिन ता किट ता गिन ता किट ता किट ता धा न दाति दा। और फिर सब थोड़े उलझ गए थे। फिर बोले, नासिक दम बताओ। अब महाराज जी ऐसे पूछेंगे तो दर्द तो वैसे भी पेट में ऐसे पता नहीं क्या क्या होने लगा था, पर थोड़ी कोशिश की तो मैंने उनको दम बताया। तो बोले, हाँ अब सिखाती रहो 2-3 दिन तक, और कोई तालीम नहीं हो सकती। मैं तो एकदम उनके पैरों में ही माफ़ी मांगने के लिए गई। मैंने कहा, महाराज जी माफ़ करिए, लेकिन ऐसे सुना था लोगों से, इसलिए मुझे बुरा लगा। मैं तो जानती हूँ आप कुछ भी कर सकते हो। अब महाराज जी के लिए एक
चक्रधार पारण करती हूँ। इसका भी ये है कि ये पहले पोना का दम था। धान केड़ धान देग नग तटक तान दाति दान दाति दान दाति दान दान केड़ धान। तो सब लोग पढ़न तो करने लगे जोर शोर में, पर फंस रहे थे। तो दूसरे ही क्षण महाराज जी ने कहा रुको 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 रुको, मैं सीधा करके देता हूँ। तो ये एक प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। স্মৃতিচারণ এক অর্থে সুস্থতায়, হারানো ক্ষত স্মরণের মধ্যে দিয়ে, স্মরণের স্পর্শে সুস্থ হয়ে ওঠে। আসলে মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারাটা একটা আমাদের পক্ষে, মানে অতি ক্ষুদ্র আমি, এটা খুব কঠিন বিষয়। কিন্তু আমি মহারাজজিকে পেয়েছি অনেক পরে গুরু হিসাবে। এই মহাসমুদ্রের কাছে আসতে আমার অনেকটা সময় লেগে গেছে। তার কারণ আমি মনে করি নদী যেমন মহাসঙ্গমে মেশার জন্যে অনেক উতার চড়াই শেষ করে এসে সঙ্গমে মেলে আসে, বিশাল সমুদ্রের কাছে এসে সে কিছুটা ভয় পায়, সে কিছুটা হারিয়ে যায়। কিন্তু মহারাজজি আমাদের ঈশ্বরের মতো, সেই ঈশ্বরের স্নেহে তার ভালোবাসা দিয়ে আমরা যখন এই মহাসমুদ্রে স্নান করলাম, তখন মনে হলো যেন আমরা স্বর্গের আস্বাদন গ্রহণ করলাম। আমার খুব ভাগ্য, কত জন্মের ভাগ্য বলে আমি এইটুকু প্রাপ্তি লাভ হয়েছে আমার। মহারাজজি মতো এরকম একজন মানুষ আমার গৃহে এসেছে, শুধু একবার নয়, বহুবার। এই অধম এর গৃহে আমি তার শিষ্যত্ব লাভ করাতে তিনি আমার গৃহে এসেছেন, এটাতে আমি ধন্য হয়েছি, আমার জীবন সম্পূর্ণ হয়েছে। বিং এ কথক ডান্সার আমার মনে হয় এ হচ্ছে আমার মুক্তির आनंद। महाराज जी प्रणाम, सदर प्रणाम महाराज जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमें सौभाग्य है कि महाराज जी जैसे गुरु के सानिध्य में हम आ सके। हजारों साल
वो जहाँ पे रहे हमें ऐसे कृपा करते रहे और आशीर्वाद देते रहे कि हम सब लोग मिल के कथक परिवार उनके जो लेगेसी, जो उनके अनुभूति है, उसको आगे लेके जाए, नई पीढ़ियों को बोले, सिखाए, उनको समझाए कि कितना बड़ा एक बट वृक्ष थे जिसके नीचे हम सब थे, वो अभी भी है, हमारे साथ है, हर एक कोने पे है। जैसे उनके डांस हर एक जगह पे मौजूद है, हमारे मन में मौजूद है। एक छोटी सी टुकड़ा जो मुझे बहुत पहले हम लोग बचपन में शायद सीखे थे, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और वो मैं महाराज जी की तरफ पूजा अर्पण कर रही हूँ। Tigadinna, dhinna, tintinna, tikadinna, ta-thi, tata-thi, a-thi, tata-thi, thi-ya, 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 ta-thi, 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 tata-thi, ta-thi, a-thi, tata-thi, thi-ya, 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 ta-thi, 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 tata-thi, a-thi, tata-thi, thi-ya, 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 ta-thi, 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 ta-thi. नमस्कार। पहले मैं महाराज जी की आत्मा की शांति कामना करती हूँ। उनके बारे में क्या बोलूँ, जितना बोलूँ कम है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उन जैसे गुरु मुझे हर जन्म में मिले, इतने प्यार करने वाले गुरु। आज जो पूरे दुनिया में ये कथक परिवार बने, ये तो उन्हीं की दान है। ये नहीं कि ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी में, देश की हर कोने कोने में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट टाउन में, जैसे मेरे जो जन्म भूमि है वो मुर्शिदाबाद की बरहमपुर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है। पिछले 20 साल से उन्होंने जाके ट्रेन पे चढ़ के गए और इतने लोगों को सिखाए, और उनके जो ऑडियंस है, जो कथक क्या है ये उनको समझाए। ऐसा काम मेरे ख्याल से कोई नहीं किए, और हम सभी कथक परिवार के लोगों की यही कोशिश है उनकी ये लेगेसी को सही तरीक़ा से आगे लेते जाए। अंत में मैं उनकी चरणों में फूल स्वरूप उनके पास सीखे हुए एक परमेलू धमार ताल की डालना चाहती हूँ। नमस्कार। Dita, dita, da, da, dina, dina, da, tao thung hao, tak ti thung hao, tak ti tak ti ki tak ho, om tak ti tak ti ki tak da da tak thung ga da, thung ga da, tak ti ki tak thung, ti ki tak da di, da di, ti tak di ki ta thung ti ki tak ta di ki da da di ta. Maharaj is a father figure since last 25 years. He has a great influence in my life as well as entire my career. I am blessed. He taught me this particular piece before Goa Film Festival. मलती गुंधाए देश प्यार गुगवारे, मलती गुंधाए देश प्यार
गुगवारे मुखदामिनी सिदाम खत छाल मतवारी छाल मतवारी छाल मतवारी ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 छेड़ छेड़ मोरी गरवाला छेड़ मोरी गरवाला गाई काहे छेड़ छेड़ मोरी नंद को लाल सोठीत नंद को लाल सोठीत बरबस मोरी लाजली लाजली बरबस मोरी लाजली बिंदा शाम मानत नाही बिंदा शाम मानत नाही कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई काहे छेड़ छेड़ मोही। नमस्कार। आज महाराज जी के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। कभी सोचा नहीं था कि महाराज जी के बारे में बोलना पड़ेगा जब महाराज जी नहीं रहेंगे। बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अंदर से आंखों में आंसू आ रहा है। मैं एक चीज़ बजाऊंगा जो महाराज जी का बहुत ही पसंद का था, और वो बजा के मैं मेरा श्रद्धा महाराज जी के चरण में निवेदन करता हूँ। शीश मुकुट कटिकाछनी शीश मुकुट कटिकाछनी पुरबे जंती माल यह बानीक मोमन बसो यह बानीक मोमन बसो सदा बिहारी लाल सदा बिहारी लाल सदा बिहारी लाल।
नमस्कार। आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारे आदरणीय गुरु पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। वो आज हमारे में नहीं है और इसके लिए मैं सर्वप्रथम उनको मेरी तरफ से मनपूर्वक श्रद्धांजलि देती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महाराज जी को मेरा 1993 से बहुत गहरा परिचय था, स्नेह था। वो मुझ पर और हमारे पूरे परिवार पर बहुत प्रेम करते थे। महाराज जी जैसा कलाकार फिर से निर्माण होना ही शक्य नहीं है। महाराज जी ऐसे थे कि वो उत्तम कलाकार, उत्तम प्रतिभावान, उत्तम गुरु। वो अपने हाथ से उन्होंने बहुत सारे कला जगत को बहुत समृद्ध किया। उनकी रचनाएं, उनकी तिहाइयाँ, उनका रोम रोम नाचता था। और मुझे ऐसा लगता है कि कथक का कोई भी कलाकार उनसे प्रभावित नहीं हुआ होगा, ऐसे नहीं है। हर एक को महाराज जी का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगता था। और महाराज जी हम सबके परमेश्वर थे, कथक जगत के हिमालय थे। उनको मैं फिर एक बार मेरे मन से श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ और कुछ नहीं बोल पाती। नमस्कार, मैं तबला वादक मुकुंद राज देव, आदरणीय नृत्याचार्य पंडित बिरजू महाराज जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बिरजू महाराज जी तो मेरे गुरु थे। बचपन से उनको नृत्य करते हुए देखा है और उनको हर पल देखते देखते वो सब बहुत सीखने का प्रयास करता था। बाद में मेरा बहुत सौभाग्य है कि उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला और उनके साथ संगत करने का बहुत बार अवसर मुझे मिला और उस माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तबला हो, कथक की संगति हो और पूर्ण एक संगीत के बारे में उनका जो विचार, वो तो पूर्ण संगीत थे। गायन, वादन, नृत्य, भगवान श्री कृष्ण का उनके ऊपर आशीर्वाद था, ये तो हम सब लोग जानते हैं। माँ सरस्वती उनमें वास करती थी। तो बोलों में इमोशन कैसे है, बोलों में लय को कैसे बरतना है, कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, उठान कैसी होनी चाहिए, तत्कार को कैसे डेवलप करना है, पेशकार कैसे होता है घुंघरू के माध्यम से, ये हर चीज उनसे बहुत मुझे सीखने को मिला। आज ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी बजा रहा हूँ, उसमें आदरणीय महाराज जी का बहुमूल्य योगदान है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो युग प्रवर्तक थे। उनकी छोटी छोटी बातें, उनके कोट्स के सम यानी कृष्ण है। जोश के साथ होश रखिए, हमारी लय मुश्किल है लेकिन मुसीबत नहीं है, ऐसे महाराज जी कहते थे। तो ये सब चीजें छोटी छोटी है लेकिन इसमें से इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है और पूरे कथक विश्व को उन्होंने एक ऐसा सीख दी है। तो मैं भगवान से यही नम्र रूप से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो सीख दी है, उन्होंने जो सिखाया है, उसके ऊपर हम चल सके। महाराज जी अगर शरीर रूप से हमारे में नहीं है, लेकिन उनकी ये जो सीख है, उनके जो हर बातें हैं, उसमें जो उन्होंने सबको सिखाया है, उस माध्यम से वो हर पल हमारे साथ है, आशीर्वाद दे रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुत आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सिखाया हुआ है उस रास्ते पे हम चल सके और संगीत की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत बहुत नमस्कार। Pranam to my Guru Maharaji, Saraswati Didi Pranam, and all the members of Maharaji's family. Today I'm going to do Padan Amad. Maharaji always liked my Padan Amad, he always said that, and I'd like to pay my tribute by doing this Amad today. Ti se ka ta ga di gi na ma ta ka tum ga ha gi din gi ha dha din ta dit ta ki ra dha tak
ka, tum, ga, ta, ki, te, ta, ka. Ti, te, ka, ta, ka, di, na, ta, te, ta, te, a, te, ta, te, ta, te, ta, te, ta, ta. Namaskar. Namaste. My name is Mumtaz Ali. I'm from South America. I was a student of Maharaji and still a student of Kathak dance. I was sent to India by my first guru, Sri Pratap Pawar, MBE from London. He was my teacher and a perfectionist. Then he sent me to the greater one, Maharaji. Maharaji made us alive in dance. Maharaji made us dance, compare us to natural things. If you have to make an expression, it's compared to any bird or any animal or any something which is called beautiful. Maharaji was a gift from God. Although he's gone, but he's alive around the world. Many students from everywhere keep him alive. Maharaji will never be forgotten. He is the greatest of soul we can ever think about. Maharaji enhanced his English language because he had to teach myself. Philip McClintock was a colleague. And happy birthday wherever he is, and may his soul rest in peace. But we celebrate Maharaji, the greatest. I thank you and happy birthday, and to all my colleagues, namaskar and happy birthday. गुरुवे नमः। महाराज जी मेरे लिए एक गुरु, फादर फिगर और स्पिरिचुअल मास्टर थे। वो ज्ञान की गंगा और बहुत ही सच्चे इंसान थे। जो कोई भी उन्हें मिलता था वो अपनी कला के माध्यम से उसका दिल जीत लेते थे और वो इंसान उनका प्रशंसक बन बैठता था। मैं और मेरा परिवार हमेशा दीदी और महाराज जी के आभारी रहेंगे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं अपने जीवन में, ये सब महाराज जी के आशीर्वाद से है। महाराज जी हमेशा बोलते थे, जीवन कला को समर्पित रहे। उनके कथनानुसार मैं अपना कर्म कर रहा हूं। महाराज जी हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता रहेगा। गुरुवे नमः। Namaskar. I don't have any word to express about Maharaj Ji. Losing him today feels like the sudden disappearance of the soothing shades of a banyan tree. But death is the final truth. My eyes well up with tears, thinking that we may never be able to touch his feet again, never be able to attend on him anymore. But his creations are eternal, and so he will forever stay alive with his creations. Some may find him in the countless Paran, Tukras, Tihais, Parmelus and Amads. Some may find him in the Bhajans, Thumri, Dadra, while many others may stay mesmerized by his skills at tabla, his paintbrush and his poem remains as invaluable resource for today and future. He is immortal.
That is why he is a god personified. Namaste, myself Archana Joglekar. Last more than 40 years, I was blessed to be associated with Maharaj Ji, been learning from him at various workshops. Myself and my mother, Guru Asha Joglekar, we both had a very wonderful bond with Maharaj Ji. What I specifically remember about him is every small little composition that he would make would have such inherent melody and lay, and the small nuances of the jatis that he would create कि सुनने में वो बहुत आसान लगे, लेकिन जब तक आप लय ताल की तैयारी ना करो वो तिहाई सीधी नहीं आएगी सम पर. So you have to really be a good student and be very vigilant and diligent about learning and paying attention to the detailed nuances in the lay and tal of every composition he had created. His every composition was unique in itself, and not just unique, but it opened multiple dimensions in all the directions for the students, that you could go to the infinite level from that one composition. He laid down the niche for various compositions and the melodies that can be created through various rhythmic compositions. Not only that, उनका जो अभिनय था, उसकी बारकाइयाँ, उसकी नज़ाकतें, उसमें की सहजता, it was just beyond the words to be described. He will always be with us. He will be always blessing us. He will be always within our art, and we will always be worshipping him. महाराज जी की बनाई हुई एक छोटी सी तिहाई सुनाती हूँ. ये ताल धमार में है. उसके कई अलग रूप भी उन्होंने सिखाए थे. उसका ये पहला रूप सुनाती हूँ. ग धी ट धा ग दी न ता कत धा कत धा कत धा कत धा तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट धिकिट कत धा 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 तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट धिकिट कत धा 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 तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट धिकिट कत धा कत धा धी ट धा ग दी न ता. पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी आज हमारा बीच में वो नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ की न्यूज़ सुन के हम सभी को बहुत ही दुख पहुंचाया. पूरा इंडिया का आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट को बहुत बड़ा शॉक लगा. महाराज जी के बारे में मैं तो 2 शब्द बोलना चाहता हूँ. 1992 में जब विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता, वहाँ पे सब डांस फॉर्म्स आर्टिस्ट लोग मिलके वहाँ जो परफॉर्मेंस किया, उसमें महाराज जी इतना अच्छा ब्यूटीफुली कोरियोग्राफी किया, मेरे को अभी भी याद है. उन्होंने वहाँ इतना बड़ा कलाकार है, खुद ही गाते हैं, खुद सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, और उनका जो कथक नृत्य में कोई भी उनके समान आज तक कोई दिखाई नहीं दिया. उस टाइम में जब महाराज से मुलाकात मेरे को हुआ, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली हमारा जो प्रोग्राम का जो नंबर्स है, वो नंबर सब आर्टिस्ट को इकट्ठा करके उन्होंने एक कोरियोग्राफी किया ब्यूटीफुली. वो प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ, आज मेरे को अभी भी याद आती है वो सिचुएशन. आज महाराज जी हमारा बीच में नहीं है, और ये दुख की बात ये है, जितना कथक आर्टिस्ट है इंडिया में,
सबको एंड दूसरे आर्टिस्ट को भी बहुत शौक लगा। मेरा तरफ से, मेरा वाइफ वनश्री राव की तरफ से उनकी फैमिली मेम्बर्स को हमारा Namaskar, everybody. I never thought that this day will come when I'll be sending my birthday message to Maharaj Ji when he's not around in his physical form. However, I'm sure he would have a great time today watching all the messages, listening to his students and friends and families. So happy birthday, Maharaj Ji. And happy birthday to his dream place, Kalashram, which should be in a couple of weeks' time, celebrating its birthday as well. As we know, what a great artist he was. I'll just share with you one incident. We were in Barcelona performing, and I was not supposed to perform. But the day before the show, a couple of days before the show, the organizer said, your picture was already in the poster, so if you can even do something small. So I said to Maharaj Ji, I would like to do a bhajan or something, a similar piece on Draupadi. Do you know it? Do you have any bhajan, anything on Draupadi? And he said, koi nahi, hum likh lenge abhi. So this was on Thursday night. I spoke to him, and by Friday morning he said, call the musician, and he had the piece. He had written the beautiful song on Draupadi, and the musicians were there. He just said to the musicians, set the music, it was all ready, and Friday evening I performed. And I think this was a quality which was just unthinkable. A person who was so multifaceted that not only choreography, dancing and performances and teaching, but instantly writing and tuning it and finishing it. And because I requested for it, so he probably had me in his thoughts to make it relevant for me. And that was the greatness of this master. I mean, there are so many other stories, but I thought I'll just share with you. Thank you, everybody. Dance is nature. Observe it, communicating a perfect symphony. Space, movement, time, and force gracefully blending in harmony. Your Midas touch turns world into an appreciator. The aura continues around and guides through every moment with involvement and dedication. Krishna resides in you. You are now the Divine One. You mentor my inner Krishna, enchanting into a better one. You are the Sun. You are eternal. You are the everlasting glory. Maharaj Ji, I humbly bow down to you for your Kathak's immortal story. नमस्कार सभी जनों को जो इस सभा में आए हैं। मेरा नाम शिवा माथुर है। मैं ह्यूस्टन में एक स्कूल चलाती हूँ जहाँ कथक, तबला और ढोलक सिखाने का प्रयत्न है। किसी अद्भुत नक्षत्र के चमकने पर मुझे महाराज जी को मिलने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला। और सबसे बड़ी जन्नत तब मिली जब उनको घर पे होस्ट करने का मौका मिला। वो हमारे साथ 5 दिन रहे और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो महाराज जी, आपकी ओर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आपकी दी हुई पूंजी, आपका प्रेम, आपकी कला, आपका ज्ञान हम अपने दिल में सिमट के रखे हुए हैं। उसको उसी प्रेम से हम बांटेंगे जिस प्रेम से आप बांटते थे। जो आपकी सिखाने की टेक्निक है वो तो उसके पास भी जाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम ज़रूर करेंगे।
हम चाहते हैं कि आप ऊपर से हमें देखते रहें और आशीर्वाद भेजते रहें जैसे आप सामने सामने करते थे। तारिका यहाँ पर मेरी बच्ची, उसको भी ये इतना बड़ा अवसर मिला आपसे सीखने का, और वो आप ही की चरणों में एक बंदिश पेश करना चाहेगी जो उसने आपसे सीखी थी। नमो नमो नमस्कार, चरण स्पर्श महाराज जी। Namaste. Over the past 6 years of my life, I've been so fortunate and grateful to have had the privilege to learn from Maharaj Ji. And even though I was only able to go to India for just a few weeks at a time during my limited winter breaks from college, over the past 2 years during COVID, I was able to learn with Didi through Zoom every Saturday morning. And there was one particular Saturday class in which Maharaj Ji had spontaneously FaceTimed Didi. And so, therefore, he joined the class and he was able to teach us a beautiful bandish that I would love to share with you all today. Dha din din na din din na, titi din na ta din din. Dha din ta dha na din ta, kradha din ta, kati ta kat dhagi ta digina, kata gadi gina dha din ta, dha din ta tadha, kata gadi gina dha din ta, dha din ta tadha, kata gadi gina dha din ta, dha din ta tadha. Namaskar, मेरा नाम नंदिनी है and I think I might be one of the few students who got acquainted with Maharaj Ji fairly recently. I have known Maharaj Ji for 7 or 8 years now. And I don't know what I can say about Maharaj Ji as a tribute that people don't already know. So I thought instead of being a little sad and upset, I would share some happy memories of my time with him. My bond with Maharaj Ji was not over dance, but actually over music. I met him the first time in probably 2012, 2013, and then over several years during his trips to North America. Thanks to Anandita, I got to spend a lot of time with Maharaj Ji, and I remember this distinctly. It was his trip, it was after the success of Romeo Juliet in 2016. Once he was back in India, I had called him one day to seek his blessings because it happened to be Ganesh Chaturthi and also my birthday. So I called him, and out of nowhere, Maharaj Ji went, "हम सोच रहे हैं हम आपको गाना सिखाएंगे." I was in shock. I turned to my husband and I said, "Did he just say हम आपको गाना सुनाएंगे?" And my husband said, "नहीं, I think he said हम आपको गाना सिखाएंगे." True to his word, Maharaj Ji called me the next Sunday, and since that day, every Sunday, post his dinner, before his bedtime, has been Maharaj Ji's time with me, teaching music. And I don't know what I did to deserve him as a guru, because I was a nobody, a total non-singer. I sang filmy songs, but was never ever trained. So, and for somebody like of Maharaj Ji's stature, whose entire existence is pretty synonymous with rhythm, he found a student in me, and I was somebody who to date, I think I do not understand Tal at all. Maharaj Ji, being the eternally patient saint that he is, was taught me how to understand Tal and how to understand rhythm and how to sing to it, and I will be forever grateful to him for that. His unconditional love, the attention he gave me, and like I said, he was ever so patient with me. I learned a lot from him in the past 5 years, and I can't help but think how blessed I feel that this happened to come to me in my life. Thank you, Maharaj Ji, for that. The waters of eternity, as the water flows and merges with the ocean, the light that you awakened in
every artist will flow and merge into the infinite light. Your joy will live on. You have left this physical plane but still remain within our hearts as love. That love will live on. Your every thought mirrored the blue Krishna. That blue will live on. One day, when we meet again, we will again dance together on the waters of eternity. If any artist lived the sounds, visions, and energy of nature, it would be Maharaj Ji. His very name conjures the images of immense grace, artful footwork, and sublime elegance in dance. Musically exceptional, Maharaj Ji rendered soulful compositions that affected the listener deeply. He did not only teach in set classrooms, but was constantly in a state of what can be only described as Zen, singing and playing many different instruments long into the night. He imparted his divine knowledge of rhythm and music to all those who were fortunate to be in his company. This was and is a great maestro who was introduced to the Temple of Fine Arts and Saraswati Mahavidyalaya by His Holiness Swami Shantanand in the year 2000. Since then, Maharaj Ji has visited and taught the students and maintained that deep connection that is still strong. We pay homage to this great soul and artist. May he guide us from that Gandharva Loka and bless our every endeavor. Some. How to start, where to end. Tali. When did this era start? Why would it end? What is tomorrow and yesterday? Kali. From the gaze of this silence today, does love linger forever, like the scent of a petal lost in the stillness of transition? Kali, how can it end if it never ever started? Some. Pranam Maharaj Ji. Hari Om. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রদীপটি নিভে গেছে। সুর, তাল, লয়, ছন্দের আলোয় সারা পৃথিবীময় যিনি আলোকিত করেছেন, তিনি আর আজ আমাদের মাঝে নেই। আজ মহারাজজির জন্মদিন, শুভ জন্মদিন মহারাজজি। আমাদের সবার উচিত হবে মহারাজজির আলোয় যারা আমরা আলোকিত হয়েছি, তার সেই আলো আমরা আরো দৃঢ়তার সহিত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে দিতে পারি। ধন্যবাদ।
Tridinna ta din dinda dha ta ka thunga dha ge dhing ne ta dha din dha hetta kede dha ta ka thunga takit taka ta dha tidi ka thagadi gin dha 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 tidi ka thagadi gin dha 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 tidi ka thagadi gin dha 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 dinda dha dinda tridinna ta din dinda dha dinda dha din tridinna ta din dinda dha ta ka thunga dha ge dhing ne ta dha din dha hetta kede dha ta ka thunga takit taka ta dha tidi ka thagadi gin dha 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 tidi ka thagadi gin dha 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 tidi ka thagadi gin dha 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 ta dha dinda tridinna ta din dinda dha dinda dha dinda tridinna ta din dinda dha भजे ब्रजेक मंडनम समस्तताप खंडनम स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपीछ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणु हस्तकं अनंगरंग सागरम् नमामि कृष्ण नागरम् नमामि कृष्ण नागरम् नमामि कृष्ण नागरम् प्रणाम महाराज जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटी सी निवेदन, तिहाई तीन ताल। दिन दा दा दिन दिन दा धा दिन दिन ता ता दिन दिन दा ता कीटे ता कटा कीटे ता कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कतरी मीता कीटे ता कटा कीटे ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कतरी मीता कीटे ता कटा कीटे ता कीटे धी कीटे धा ती धा कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा दिन दा धा दिन 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 दिन ता कदे मिटा कीटे ता कटा कीटे ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कदे मिटा कीटे ता कटा कीटे ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कदे मिटा कीटे ता कटा कीटे ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा ता कीटे धी कीटे धा ती धा। Namaskar, I'm Anuradha Nag from San Jose, California. Today we are here to celebrate Maharajji's life. To me, Maharajji was the epitome of love. He loved everybody and everybody loved him. I wanted to share a small story. In 2018, Maharajji was visiting and we were celebrating Maharajji's 80th birthday. At night, he would eat 2 chapatis and he was asking for a third one. So after a couple of days, I was very curious and I very quietly came and stood here. He would eat sitting on this day bed.
And we have a chocolate Labrador dog who was by him, sitting near his feet and begging for food. So Maharaji was eating and tearing the roti and feeding him. So he spread love amongst all living beings that I can think of. Secondly, I wanted to also share that he was a giver. He was very passionate about teaching. And because I lived so far away, every time that he came, he would leave some of his newer creations with me to learn and to ponder over. So in 2005, he was creating a lot of new Tora Tukras in Rupak Tal. And today, it's my humble tribute. I will present a small Tukra and a Tehai, which he had taught me then. Thank you. Tin tin na, dhin na, dhin na, tin tin na, dhin na, dhin na. Katada, 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 takita dhikita, takita dhikita, dhene takita dhikita, takita dhikita, dhene takita da ta, dhin ta ta. Katada, 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 takita dhikita, takita dhikita, dhene takita dhikita, takita dhikita, dhene takita da ta, dhin ta ta. Katada, 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 takita dhikita, takita dhikita, dhene takita dhikita, takita dhikita, dhene takita da ta, dhin ta, tin tin na, tin na, tin na, tin tin na. Tin tin na, dhin na, dhin na. Tat tat te da de te tat tat te te da de te tat tat te da de te tat tat te te da de ta te te da de te ta te ta te ta. 1 2 3 4 5 te da de te ta te ta ta te ta. 1 2 3 4 5 te da de te ta te ta. Dhin na, dhin na. I want to thank Sashwati Didi and everybody at Kalashram for organizing this beautiful event and including all of us. Thank you, Didi. नमस्कार, मैं कुणाल सेन न्यू जर्सी से। मैं संयुक्ता सेन महाराज जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनको हम याद करते हैं और उनकी 84th बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको शत शत नमन। महाराज जी ने ऐसा लगता नहीं है महाराज जी नहीं है, महाराज जी यहीं पर हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। उनका संगीत, वादन, नृत्य तो एक अपने आप में कितने महान कलाकार थे, नहीं कहूँगी हैं, जो कि हमारे साथ सदैव रहेगा। महाराज जी एक बहुत ही सरल इंसान थे। वो जब भी न्यूयॉर्क आते थे वो हमारे घर आते थे और जब भी वो हमारे घर आते थे तो बहुत लोगों की जमघट होती थी। बहुत कला प्रेमी और उनके मित्र आते थे और फिर वो फिर एक महफिल सी जम जाती थी। उनकी इतनी सारी यादें हैं कि मैं एक छोटे समय में उनको ये सारा कुछ हमारे लिए उसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। बट आई लाइक टू शेयर सम ऑफ द वेरी precious moments and through his photograph and some videos. I hope we will all be remembering through his work. Namaskar. नमस्कार, धन्यवाद। रे मन बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों को मैंने एक तिहाई में नाम दिया है। गा रिम डिम दा ले जगतिन ना जग जना गदगिन धरि दान धरि दान धरि दान दा दा ति दान दा ति दान दा ति दान दा धा ति दा धा ति दा धा दा den ta ka den ta da ka den dig dag na te da ta ta ka den ke dig dag na da ka da da ka da ka da ka da dena da ka da dena ta 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 ka den ke dig da ka te na ta ka dena dig na da na ka da den din da ka den ka da da dig da den da ka te den ka den ka den
takita takita dena dena ta vita fitina ta dena de dena ta dena da dena da I just wanna go back to the way we were. Where प्रणाम महाराज जी। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ना दिन दिन दा धा दिन दिन तग दिग तग दिग तग दिग तग दिग दा था दा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तग दिग तग दिग तग दिग तग दिग धा ता धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तग दिग तग दिग तग दिग तग दिग धा ता धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा तकिटगिन तदा तकिटगिन धा। प्रणाम महाराज जी। धी ध धी ध ध धी न धी न ता। एक दो तीन चार पाँच 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 सात एक दो तीन चार पाँच सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच सात नाम गा। एक दो तीन चार पाँच 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 सात 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 नाम गा। एक दो तीन चार पाँच 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 सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच सात एक दो तीन चार पाँच सात नाम। Namaskar, my humble pranams to everyone. We are all very saddened that Maharaji is no longer with us, but I'm sure his teachings and his legacy will continue to live through all of us, all his students and disciples forever and ever. So here's something short that Maharaji taught me in Tal Damar, just a tihai in Tal Damar. Ka thi ta tha, ka ti na ta. Tatitana dikita tatitana dikita tatitana dikita tatitana dikita da dhana dikita da dhana dikita da tatitana dikita tatitana dikita tatitana dikita tatitana dikita da dhana dikita da dhana dikita da tatitana dikita tatitana dikita tatitana dikita tatitana dikita da dhana dikita da tatitana dikita da. Namaskar. Hari Om Maharaji, Hari Om everyone. This small offering that I'm doing was taught by Maharaji to us in SMV Perth in 2006 after he saw the Vishwavinayaka that we had presented, and he called this tukra the SMV tukra. So seek the blessings of all of you, Maharaji. धारी धी धारा धी धी धारा एक तीन सात सात धी धी एक दो तीन चार पाँच सात आठ एक दो तीन चार पाँच सात आठ एक दो तीन चार धी ताकि कर 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 धा एक दो तीन चार
5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 din takita din takita din takita din takita din takita din takita da 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 din takita din takita din takita din takita din takita din takita da. পান্ডব প্রতিভারঞ্জন ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টসের তরফ থেকে আজকে আমরা মহারাজজির জন্য একটি ট্রিবিউটের প্রয়াস করেছি। মহারাজজি আমাদের এই ইনস্টিটিউটে দুবার এসেছেন। আমরা ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এমনকি উনি ছোট বাচ্চাদেরও খুব যত্ন সহকারে খুব ভালোবাসার সঙ্গে শেখাতেন। তাই আমরা দেওয়ার মতো মহারাজজিকে যেটুকু আছে আমাদের এই নৃত্য, সেটার মাধ্যমে আজকে ওনাকে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার আমরা প্রচেষ্টা করছি। नमस्कार। हम गुरु बरन बैनर्जी के शिष्य हैं। आज हम अपने नृत्य द्वारा महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष 3 ताल में कुछ बंदिशें।
Namaskar. Naman to the greatest legend of Indian classical dance. Maharaj-ji, as he is fondly known as by all his disciples across the globe, is the epitome of grace and beauty. And this beauty he sipped from everything around him. His immediate environment, nature, animals, and he translated it into his art form with utmost ease. Maharaj-ji's soul was Kathak. The two energies of power and grace coexisted in him simultaneously. As I speak to you today, his voice echoes in my ears as he spoke to us, his disciples, explaining how much the aesthetics of Kathak meant to him. And we also witnessed his deep sadness whenever he saw this, his most beloved Kathak, got compromised by showmanship or some super turbo speed of modern contemporary Kathak. After his demise, it made us more so responsible, as because we know that his art form can only move forward through us, his disciples. And no one single person can do it by himself or herself. We unitedly has to come together to carry forward his legacy with utmost honesty and integrity. We have to dance. That's what he taught us. But not only to dance, but to dance it the royal Maharaj way, Birju Maharaj way. I will end my obituary seeking his blessing as always and remembering him through his words. Guru charanana para sheesha jhukao, Hari charanana para sheesha navao. Guru और हरि दोनों रूप समाना, गुरु चरणन पर शीश झुकाओ. ज्ञान ध्यान ब्रज श्याम ही दीनी, ज्ञान ध्यान ब्रज श्याम ही दीनी, जपूं सदा